हेलो स्टूडेंट्स आज हम देखिबा जे स्पोकन इंग्लिश रे जतबे इंग्लिश कहंती किछि गोटे प्रोसेस को डिस्क्राइब करंती फॉर एग्जांपल हम आज देखिबा एठी जे गोटे घर तयारी करा हुए तो घर तयारी करिया पे नॉर्मली हम केमति देखि प्रोसेस को डिस्क्राइब करबा अन्य को टोटल प्लानिंग ता केमति हम बुझेइबा से विषय को नै आज हम वीडियो रे सिखिबा सो इट इज वेरी इंपोर्टेंट that you should explain in a sequence, proper sequence. That means what you should tell first, what should be the next, and what information is important that you should include in your discussion, and what you should exclude. It plays an important role to make your discussion or speech effective, right? So here we have some sentences that we have written about how to construct a house. Okay, এটা তুমি নিজ হিসাবে চেঞ্জ भी करि परिबो एथे एमति किछटा फिक्स नै बट इट इज जस्ट अ प्रो फॉर्मा इट इज लाइक वन काइंड ऑफ मॉडल फाइन द फर्स्ट ले एट फर्स्ट सिलेक्ट ए प्लॉट गोटे प्लॉट सिलेक्ट करबे जोठी हमें एक्चुअली घर तैयारी करछों सेकंड थिंग रिमार्क द फाउंडेशन जो हो ताको मार्किंग करे जो कोठे केमति हमरो फाउंडेशन टी लेआउट दिया हो देन डिग आउट द फाउंडेशन कैनल गुड़ा को जोठी हमरो एक्चुअली तैयारी हो फाउंडेशन से कैनल गुडी को में डिग आउट माने खोलिबा ताको माटी खोलिबा एटलीस्ट डिपेंड करछ केति गभीरता जाय खोला हो एंड फिल द कैनल्स विथ स्टोन चिप्स सैंड एंड सीमेंट दैट इज यू हैव टू यूज ऑल दिस materials to fill the canals. Then construct the walls using bricks, cement and sand. Once you complete the foundation, then you have to make the walls. तो wall तैयारी करिबा सेति में bricks, cement and sand को हमें सेता fill up करिके तैयारी करिबा मैं कांथ उठेबा when wall is ready जतल तुमरा कांथ रेडी हो जाउची fix setting to build slab पे हमें setting fix करिबा सेते setting माने जो ठेसो सब दिया हुए then make the concrete slab using cement, sand, pebbles and rods. माने हम स्लैब तैयारी करिबा स्लैब पाई सीमेंट सैंड पेबल्स माने गुडी और रॉड्स आवश्यकता पड़ी थाए सो एई सब रॉ मटेरियल को नै कि हमें कंक्रीट गुड स्लैब गुड तैयार करले देन प्लास्टर द वॉल्स एंड फिनिश द फ्लोरिंग कांथ को हम प्लास्टरिंग करिबा सब कांथ गुडी को हमरो जो फ्लोरिंग रहे ताको मध्य फिनिशिंग हम करिबा देन फिक्स डोर्स एंड विंडोज तापर प्रत्येक डोर विंडो को हमें नो डोर विंडोज दी लगेगा कलर द एंटायर हाउस घर को संपूर्ण रूपे रंग भी दे देवा सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी देन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करबा से घर को एंड फाइनली देन एंटर एंड लिव इन योर होम सो एठी में 10-12 सेंटेंस रे हम जस्ट देखिया पाइले जे हाउ इन अ शॉर्टकट वे यू शुड प्रेजेंट योर प्रोसेस बिफोर समवन एल्स सो it's not fixed as I told earlier it is just a pro forma it's like a model you have to add informations according to your requirement तुम्हें तुमरा आवश्यकता अनुसार एठी तुमरा जो भी इन्फॉर्मेशन चाहूछ ऐड करिया पे ऐड करिवो और जायटू बाद देबो चाहूछ रिमूव भी करि परिवो इट इज नॉट मैंडेटरी दैट यू शुड फॉलो ओनली these lines but this type of sentence you have to speak while you actually explain a process of making anything else you have to follow these things okay and I hope here you should understand the all sentences are of command type माने imperative type of sentence सब यूज हेची जोथरे सब्जेक्ट यू को लिखा हेनी बा ये हाइड फॉर्म रे अछि ओके तो सबले मन रखिबो जतबेले हमें एबेले कोनोसी गोटे टॉपिक को एक्सप्लेन करछुनी प्रोसेस को सेतेबेले हमरो एबेले imperative सेंटेंस को यूज करा जाय आउ बाकी को स्टेप बाय स्टेप लिखा जाय बट actually spoken in a way just it should be clear so that the message will be clear sentence is short rahila or clear rahila mean simple types of sentence rahila tahale audience ko bujhiba sahaj hobo so always try to speak the small and simple types of sentence as much as possible but once you have the good command over English you can use compound sentence complex sentence mixed sentence but actually what happened the audience all audience can't understand all types of sentences so sometimes it is very critical to actually make out what you say माने बुझिबे कष्ट होई पड़े that's why
you always try to say colloquial language माने जोटा समस्त को बुझे पे सहज हो से वाला language use करे इंग्लिश रे चेष्टा करो and I personally recommend if you are learning spoken English first time or you are trying to learn, then you should follow my videos as well as you can join my classes that I provide live class every day. So you can just give your reaction or comments in comment section. I will definitely reply you how you should join me. Okay, thank you for watching this video.